हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है चिरायू मालू और आप में से काफ़ी लोग मुझे जानते नहीं होंगे। तो अभी एज वी ऑल आर गोइंग थ्रू लॉकडाउन, तो मैंने सोचा क्यों ना हमें इतना फ्री टाइम मिल रहा है तो इसको थोड़ा वेस्ट किया जाए। तो मैं एक यूजलेस सी चीज़ सीखने वाला हूँ, एक एक्टिविटी सीखने वाला हूँ जो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बट मुझे आसान चीज़ें पसंद भी नहीं है। तो ये एक्टिविटी है, ये चीज़ है जगलिंग। तो बेसिकली जगलिंग, अगर आप गूगल से इसका मीनिंग पूछें तो एज पर गूगल इसका मतलब होता है जादू। तो मैं 3 गोलों से जादू सीखने वाला हूँ। सो लेट्स लर्न इट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी इधर उधर की बातों के। दिस इज डे 1 आवर 0। इतना भी आसान नहीं है, आई थिंक इट विल टेक टाइम। तो अभी मुझे प्रैक्टिस करते हुए 10 मिनट हो गए और मुझे लगता है कि अभी मुझे और सीखने की ज़रूरत है। तो ट्राई दिस। जितना आसान मैं समझ रहा था उतना ही है नहीं। तो अभी मुझे लग रहा है कि इसकी कुछ ट्रिक मुझे देखनी होगी यूट्यूब पे और उसके थ्रू मुझे सीखना होगा। तो लेट्स सी महिला हमें क्या बता रही है। In the 3-ball cascade, all you're doing is throwing each ball from your right hand to your left hand. And as that ball comes down, you're throwing the next ball. Right, left, had a catch. Awesome. Now let's get into the actual throws that we're going to want to do for our 3-ball cascade. In order to see the most effective. तो अभी ये बता रही है कि पहला आप एक बॉल से प्रैक्टिस करो, फिर 2 से, देन यू विल ट्राई विद ऑल 3 बॉल्स। ओके, सो लेट्स डू इट। So let's practice it from only one ball. हवा काफी है। Now let's try it from 2 balls. This is also quite easy. बस एक दिक्कत हो रही है इसमें कि ये बॉल हवा में टकरा रही है, वो नहीं होने देना मुझे, इसी की मुझे प्रैक्टिस करनी है। So 15 मिनट प्रैक्टिस करने के बाद I think that I am perfect in this. So let's do it with 3 balls. Going all over the place. So जैसा बता रही है, आप पहले अपने इस वाली बॉल को इसके आगे लाने की कोशिश करो और सेकंड हैंड वाली बॉल को फर्स्ट हैंड के पीछे लाने की कोशिश करो। जैसे कि आगे आई में that ball went there, ऊपर चले गए ऊपर। यही होता है ऊंचाइयों को हासिल करना। So अभी मैं क्या करूँगा, अभी करीबन आधा घंटा प्रैक्टिस करने के बाद मुझे इतना आ गया है।
नहीं। सो अभी मुझे प्रैक्टिस करते हुए 2 घंटे हुए हैं और कभी ये बॉल हवा में ऐसे टकरा के दूर गिर जाती है या फिर कभी हाथ में पकड़ भी नहीं आती। परेशान हो चुका हूँ मैं, तो देखते हो पाता है नहीं। वो बाहर नहीं। Nope. So guys, this is day 3 and I hope कि आज मैं अपना 30 seconds का टास्क पूरा कर लूँगा. So let's do it. कितना हुआ? 12.90. Okay. Let's do it again. Very good. 28. Let's do it. So guys, I took around 3 hours to learn juggling and I challenge all of you to learn any new skill and let me know.